let's bring you, there are 2 more questions to share with you. This is question number 6 on the survey, 7 questions in all. This is the aspect of rights of succession and inheritance. Should men and women have equal rights of succession and inheritance? 82.3% have come out and said yes. Now, why would there be such an overwhelming response if there isn't discrimination on ground, ladies and gentlemen? Think about that. Only 11.1%. The minimum number of nays so far that we are seeing, Zaka, and you highlighted this aspect of inheritance. Overwhelming response. That means clear reflecting on ground. They're being affected. They're feeling the pinch of it. Absolutely. By law, by personal law, like I said, women are allowed to inherit only 1/4 of ancestral property, whereas men get half. Now, here again, if you look at it, Anand, what is interesting is, in the overall, the first question that we asked, do you support uniform laws? It was 67%. So it was 2 out of 3 who were in favor of uniform laws. Here, it is 4 out of 5. Wow. So you've gone up from 67% to 80% in terms of the people who believe that both men and women have an equal right to property. It goes even higher amongst graduates. It's 85%. Almost 9 out of 10 are saying that it should be equal rights when it comes to inheritance of ancestral property between men and women. Same is the case when you look at the younger age group as well. It's 83.5. It's about a little more than 1% of the overall sample. Whereas older people tend to agree that yes, women and men can have different sets of laws when it comes to inheritance and succession. But I think this is one real big pain point for Muslim women, the fact that they don't get equal rights. Remember, all other communities, Hindus, Christians, and the Christian Succession Act was amended after Mary Roy went to the Supreme Court and challenged the fact that Christian women were not getting equal share in ancestral property. That changed in the late 1980s. But now it's only Muslim women who are not entitled to equal share, just like their brothers, just like their husbands, just like their sons. And if you were to, extend this further, in the case of a Muslim widow, she's only entitled to 1/8 of the share of property. Whereas for the case of Hindu widows, Christian widows, if there are no children, then they get the entire property that's been bequeathed by the husband who has passed away. Whereas for Muslim women, it's only 1/8. And I think this has been the standout question out of the 7 that we asked. This is the question that we got the maximum response for in the affirmative. Like I said, in the first question, it was 67%. In the 6th question, it's 82%. So yes, this is a huge pain point. The fact that women and men have different sets of proportions of inheritance when it comes to very interesting insight this has comes through, because if you were to actually change it into numbers, Zaka, 27 crore Muslim population, Indian Muslims in our country, 27, nearly 50% are women. So if you're looking at nearly 13.5 crore women, 8,000 samples is just a representation of these 13.5 crore women. And if that voice is saying that we are being discriminated against, 13.5 crore people, women, is not a small number. Yeah. And I think somewhere this survey resonates with those numbers, because I think women, they have not shied, ladies and gentlemen. It's very interesting. 90% of our respondents have not shied away from giving us their names, details, etc. They prefer to come out and say who they are. That's a big, big plus. We are holding back their names and information with respect to their privacy, but they have not said कि हमारा नाम मत बताना, we want to be anonymous. No, 90% plus have come and said that. We are joined by Shayara Bano, petitioner in the triple talaq case. Shayara ji, नमस्ते. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 18 पर हमने एक सर्वे किया है, मुस्लिम महिलाओं से हमने कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा है। करीब 8,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस पर जवाब दिया है, और हर सवाल के जवाब पे एक बात सामने आई है कि रुझान एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ है। आप क्या कहेंगी? मैं कॉमन सिविल कोड के बारे में यही कहना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, और मैं इसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो निकाह हलाला, बहुगा जैसी जो कुप्रथाएं हैं हमारे मुस्लिम समुदाय में, वो समाप्त हो जाएंगी, और एक जस्टिस मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा, और एक आज़ादी मिलेगी जिसमें उनको स्वतंत्र आज़ादी मिलेगी, जिसमें वो तलाक का भी उनको अधिकार होगा, गोद लेने का भी अधिकार होगा, और मतलब जो
एक लड़की की जो एज है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ताकि मतलब वो मतलब अपने लॉ को जान सके, अपने अधिकारों को जान सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जाति प्रथा, प्रथा प्रथा वगैरह सब खत्म होती है, समाप्त जी होती है। और मुस्लिम समुदाय को एक बहुत ही आजादी, और जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक तरह से ये एक ऐतिहासिक मामला होगा। और मैं इसका बहुत ही दिले स्वागत और समर्थन करती हूँ, और जी। तमाम मुस्लिम समुदाय को स्वागत और समर्थन करना चाहिए। लेकिन शायरा जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मेजॉरिटेरियनिज्म है, माइनॉरिटीज पर जबरन एक कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगी? क्या AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पूरे मुस्लिम समाज का करता धरता है, उसको रिप्रेजेंट करता है भारत में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ऐसा कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है। और इस पे ना धार्मिक कोई अड़चन डाले, और ना ही राजनीतिक कोई अड़चन डाले, ना ही राजनीतिक कोई करे, और ना ही धार्मिक दंगे फसाद कोई करे। पर राजनीति तो हो रही है, बीजेपी का चुनावी एजेंडा कह रहा है, विपक्ष विरोध शुरू हो चुका है इसका। क्योंकि नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और ये एक सामाजिक मुद्दा है। इसको सभी जो और भी जो पार्टीज है उनको समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ताकि जो हमारा जो मुस्लिम समुदाय जो प्रभावित है, और जो जिसका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, और महिलाओं का सामाजिक विकास सही तौर पे नहीं हो पा रहा है। राइट। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसका सामाजिक जी मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक विकास होगा, जी। और हमारे देश का भी सामाजिक विकास, शायरा जी, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास इससे जुड़ा हुआ है। शायरा जी, तो इस पे राजनीति ना करें। शायरा जी, आप और मेरे साथ बने रहिए।